Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services, a video session on daily news and editorial analysis dated 8th of December. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. The analysis in this session will help all the aspirant who will be appearing for the Civil Services examination, State Public Service Commission examination, and one-day examination conducted by various state and union agencies. So through this video session, I'll make you understand the relevance of the news from the examination perspective, its importance, and its further important in the writing, the answer writing as well. So let's get started. First, I'll proceed further with the highlights of the day. Then, in detail analysis will be followed post to that. So let's get started with the highlight of the news. The first important news is about Article 99 of the UN Charter that was invoked by the UN Secretary General. इसकी क्या relevance है? ये article और कितनी बार use हुई? We'll see the detail to that. The second important news talks about the tribal university that the bill was cleared in the basically in the Lok Sabha. Earlier it was tabled in the Rajya Sabha, तो ये pass हो गई. The third important news is about the grant that was given to Tamil Nadu and Andhra Pradesh for the cyclone that we have witnessed recently. The second last news talks about the illegal migrant. Supreme Court has taken the cognizance of the fact and asked the central government to provide the details about the illegal migrants. And we'll conclude this session with editorial that talks about the COPE and the new abnormal. Specifically, a highlight has been given in the air pollutions and the deteriorating air quality in Delhi. So we'll see and understand the detailed part of this article. Let's get started with a detailed analysis of the news one by one. So the first important news is about UN that has invoked Article 99 of the UN Charter. Something very important for prelims examination. आपसे पूछा जा सकता है Article 99 किस conditions में क्या उसके criteria होते हैं when Article 99 of the UN Charter is used and who is the one who decide upon this article to invoke और क्या power दी गई है UN के Secretary General को in this regard. So we'll understand everything in detail. So UN Security Council General Secretary has invoked Article 99 जो कि UN Charter में actually establish की गई है and this aims to establish a ceasefire and in which context it was actually invoked. It was invoked in the part of Israel और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है उस कंटेक्स्ट में इन्वोक की गई है. यूएन की अगर बात करें इट्स अ 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल जो कि इस तरह के रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट करती है एंड द मेन एम इज टू कम अप विद द सीज फायर बिटवीन द इजराइल एंड हमास एंड देयर एलीज. तो देखना होगा कि किस तरह से ये कितनी इफेक्टिव होगी, वेदर will be able to come up with the resolutions and solutions or not, we have to see over the time. I'll give you the image. This is the official image that was released from the UN Secretary General office. ये प्रेस रिलीज की गई है कल 6th of December को, जहाँ पे सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस ने आर्टिकल 99 की इवोक करते हुए बात की that he is using his power. It's a prerogative of the UN Secretary General. Now, before I jump down to the other details of the न्यूज़ दैट इज कमिंग विद आर्टिकल 99, अगर आर्टिकल 99 की बात करें उससे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स की बात करें, देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, राइट. 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं एंड देयर इज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, राइट. The 5 permanent members include United States, China, UK, Russia and France. I think most of you must be aware of these facts. और जो 10 permanent members हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे हैं. Each year, the Secretary General elect 5 permanent members from 5 जो non-permanent members हैं उनके अलावे and 10 permanent members are distributed on the regional basis. So rotational basis पे भी Secretary General elect करती है अपने members और non-members को. Now, what is Article 99 of the UN Charter? This is a big question and this is the main theme of the discussion for today. So, Article 99 की अगर बात करें ये एक independent tool है. Just to point out, this is an independent tool of the UN Charter, right? And it is actually a prerogative of the UN Secretary General, जहाँ पे जो specific matter है, जो humanitarian crisis की issues है at the global level, the level which is concerning across the globe, जो एक ग्लोब के लिए पूरे विश्व भर के लिए चिंता का विषय है, उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए इस तरह की आर्टिकल 99 इन्वोक की जाती है, जहाँ पे
बाहर के फोर्सेस को भी यूज करना अलाउड होता है. द यूएन चार्टर is a founding document of the UN nations and it is seen as a discretionary power of the UN Secretary General. It's a special power जहाँ पे UN Secretary General call for a meeting with the Security Council. जो Security Council की meeting है, UNSC की meeting बुलाई जाती है और जो कंसर्निंग सिचुएशंस हैं उन पे डिबेट की जाती है, उन पे डिस्कशंस होती हैं. इफ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा फोर्सेस विल बी यूज्ड टू स्टॉप एनीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इट्स अ वॉर बिटवीन Israel and Hamas. Now, can Article 99 bring end to war? This is the another big question that we are asking for the day. तो क्या आर्टिकल 99 से जो इन्वोक की गई है, क्या वो एक्चुअली इस वॉर को ख़त्म करने में बहुत हद तक कारगर होगी? वेदर इट विल बी गिविंग इट्स प्रैक्टिकलिटी एंड द सक्सेसफुलनेस इन अचीविंग दैट. So I mean it is not guaranteed, right? It's not guaranteed because why? I'll give the details in a while जहाँ पे previous experiences को देखेंगे कि किस तरह से इसको invoke करने के बाद क्या success मिली है या नहीं मिली है. The Security Council of the UN is the most powerful body. These are some of the established fact. और ये international peace और security को maintain करने के लिए, when it comes to international peace and security, the organization is actually working for the betterment, right? And the council choose the UN security, UN के जो secretary general होते हैं advice on the ceasefire resolutions, that is giving an additional power with this implementation. तो ये सारी power जो UN के secretary general होती है, जो होते हैं उनके पास होती है. The power include the authority to impose sanctions and to authorize the deployment of internal or international forces. Sanctions के अलावे, अगर sanctions की बात करें, sanctions के अलावे जो international forces होते हैं, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की जा सकती है उस रीजन पे जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप्स और फलस्तीन के रीजन पे, इजराइल और फलस्तीन के बीच में वॉर चल रही है. Now, has Article 99 been invoked in past? इसकी क्या सक्सेस रेट रही है? So this is the fifth time that it was invoked in 2023. उससे पहले 4 बार और इसे इन्वोक की गई है. One was there in during Congo, right? 1960 जहाँ पे रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई थी कॉलिंग फॉर बेल्जियम टू विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स. देन अगेन इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971 जहाँ पे सेक्रेटरी जनरल ने 99 को इवोक किया था, वेयर द इंटरवेंशन वाज रिक्वायर्ड ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ईस्टर्न पता, जो आप बांग्लादेश कहते हैं. द आउटकम ऑफ द एक्सटेंट वाज इन्वोकिंग यूज रिमेन अनक्लियर. सो इसकी जो सक्सेस थी वो स्टिल अनक्लियर है. ईरान 1979 वेयर आर्टिकल 99 ड्यूरिंग द हॉस्टेज वाज देयर, और ये हेल्ड हुई थी 4 डेज के लिए. दैट रिलीज्ड द अल्जीरियन अकॉर्ड ऑफ 1981. सो दिस वाज द टाइम व्हेन इट वाज एक्चुअली बीन इन्वोक्ड. और उसके बाद जो लेटेस्ट थी वो 1989 में, जहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉल किया था फॉर सीज फायर इन लेबनान एक्सक्लेटिंग द सिविल वॉर. जो लेबनान में सिविल वॉर हुई थी, जिसे ग्रे वॉर भी कहते हैं, ग्रे युद्ध. सो दिस इज द थिंग दैट हैज बीन इन एक्शंस. Article 99 already has been actioned 4 times. This is the 5th time that it was actually being called for ceasefire only. Mostly ceasefire को stop करने के लिए humanitarian crisis को देखते हुए ही Article 99 rarest of the rare case में invoke की जाती है. And moving ahead with other news, that is Lok Sabha passes Central University Amendment Bill 2023, something again important, which called for establishment of tribal university in Telangana. This was during the ongoing session, the winter session which is ongoing. A Central University Act pass की गई है voice vote से. There are a lot of other things that will help with the passage of the Central University Amendment Bill 2023. So this bill actually amend the Central University Act 2009, जो 2009 में एक्ट पास हुई थी, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, और नई यूनिवर्सिटी विल बी नोन एज समका शरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, राइट. दिस विल बी एस्टैब्लिश इन मुगलू डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जामिनेशंस के लिए. And the center has actually provisions of 887.9 no 9.7 crores rupees इस यूनिवर्सिटी को sanctions किए गए हैं. This tribal university was long demanded and even it's a part of obligatory provisions which is there in the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. Now significance की बात करें ट्राइबल यूनिवर्सिटी की, डेफिनेटली फॉर द रीजन इट विल कैटर द रीजनल एस्पिरेशंस. जो वहाँ की रीजनल एस्पिरेशंस हैं उनको कैटर करेगी. इट विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन विल बी देयर. इट विल प्रमोट फॉर हायर एजुकेशन, द रिसर्च फैसिलिटी, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना. It will also provide for the advancement of providing the structural research facilities, खास करके ट्राइबल आर्ट्स की बात करें, कस्टम्स, advancement of technology and tribal population.
So there are a lot of other studies, the R&D will be done in terms of the part of populations studies, innovations, R&D, incubations, everything will be taken care for the tribal population as well. So as a part of the bringing focus to the tribal education, Central Tribal University will carry out the part of activities with compared to any other सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और इसको जो इसकी जो खास करके एस्टैब्लिशमेंट होगी, जो ग्रांट होगी, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पे दी जाएगी, बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी. Now, moving ahead with other news, that is, Center announces aid to Tamil Nadu and Andhra Pradesh for the cyclone that they have seen. So, government ने announced किया है 493.60 crore rupees for Andhra and 450 crore rupees for Tamil Nadu because of the recent cyclone that we have seen, Mechong, which was there, right? नाउ सेंट्रल असिस्टेंस की अगर बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स ने अप्रूव किया है फ्लड मिटिगेशंस फॉर स्पेसिफिकली फॉर इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज UFMA, फॉर चेन्नई बेस्ड प्रोजेक्ट, जो बेसिकली जो कि NDMF फंड्स के अंदर आती है. NDMF फंड इज समथिंग विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द फ्लड मिटिगेशन और नेचुरल डिजास्टर्स. द सीवियर साइक्लोन ऑफ द मिचिगन लेफ्ट द ट्रायल, जो कि डिस्ट्रक्शन देखी गई है आंध्र प्रदेश में, विच हैज लेफ्ट 770 kilometers road uprooted trees and killing the livestock. So there was a huge part of downpour which was there in Chennai, even in the part of region there. और इस रीजन में काफ़ी हद तक अभी स्टैंड स्टिल है और सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट है. NDRF टीम आर एक्चुअली डिप्लॉयड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट to ensure that people are evacuated from the people where they're stranded in the rainy regions. Now, casualties की अगर बात करें, as data shows, the Chief Minister Office has said that nearly 40 lakh people have been there from 194 villages, और इस वजह से impact हुई है 25 villages को. The Tamil Nadu city, Chennai, the residents are grappling with the stagnant water. बहुत जगह पानी की जमा हुई है जिस वजह से disruptions हो रही है, and even the suburb are weakened due to the metropolis and neighboring districts. जो neighboring district हैं चेन्नई के अलावे, चेन्नई एज अ पार्ट ऑफ द बिगर सिटी द सबर्ब, उसके अलावा और भी जो एरिया में वहाँ पे डिस्ट्रप्शन देखी गई है. मेनी एक्टिविटीज, द इकोनॉमी हैज बीन पुट इन होल्ड. इट विल टेक टाइम. रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड मेड अ एरियल सर्वे to look upon the real-time situations. And moving ahead with other news, where Supreme Court has sought the details about the inflow of illegal migrants, specifically in the northeastern region and the Assam region. The Supreme Court has asked the center to provide the informations of the individual granted citizenship under the Section 6A. ये काफ़ी important है Citizenship Act की. और constitutional bench जो थी Supreme Court की, which was headed by the Chief Justice of India, has been actually hearing the constitutional validity of Section 6A of Citizen Act of 1955. तो कुछ डिटेल मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द इंडिविजुअल ग्रांटेड विद द अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक्चुअली जो वैलिडिटी है 6A की, उसके बारे में दे वर एक्चुअली इंट्रोगेटिंग, राइट. So immigrants की अगर बात करें, constitutional bench headed by the Chief Justice of India have submitted the detailed border fencing estimated time completions for the fencing exercises, that how much time it will take and what is the government next course of action. This is specifically regards to Government of India, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, right. And 5 judge bench has asked the Bangladeshi migrants के बारे में उन्होंने पूछा कि कितने बांग्लादेशी migrant को आसाम में एक्चुअल में लाया गया है. This was between 1996-97 and the Section 6A subsection 2 of the Citizenship Act of 1955. Supreme Court has even sought the details about the administrative measures that was taken for the illegal immigrations, particularly in the northeastern region. So a bench was actually there, 5 bench थी Supreme Court की, headed by the Chief Justice of India. They have to, the center actually will have to submit a report to the Honorable Court ताकि वो अपने stand clear कर पाए. Now, foreigners detected की अगर बात करें, I mean, how many foreigners were there? कोर्ट ने ये भी पूछा है कितने foreigners डिटेक्ट हुए हैं, और फॉरेन ट्राइब्यूनल की क्या रिपोर्ट है स्पेसिफिकली इलीगल माइग्रेंट फॉर द आसाम आफ्टर मार्च 1971. Now, one thing that is important for you to know कि किस कंट्रीज में माइग्रेंट्स की क्या सिचुएशन, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं. If you look at the data, the immigrant trials, there's a place of resident for Bangladesh, Pakistan, Nepal, United Arab Emirates, Myanmar and Singapore. These are the details about the Punjab, the Nilgiri districts and the state of the Bangladesh counterpart, right?
Now, moving ahead with the editorial for the day that talks about the COPE and the new abnormal. What are the points that I'll be discussing under this article? First, we'll see the national capital air quality shift in the weather pattern and the conclusion part. Now, looking at the ongoing COP, अगर बात करें COP 28 की, which is going at UAE in Dubai, right? And this is something very important, which is focusing on the climate change. Fossil fuel से भी जो problems हुई हैं, जो CO2 की emissions हैं, I have been discussing this for quite long. तो CO2 की जो emissions है, जो green house gases की emissions है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके बारे में भी discussion हुई है. There's an intrinsic relationship between the air pollution and climate change, and we definitely need to work जहाँ पे fossil fuels को हमें कम करने की जरूरत है. Clean energy, we need to move towards clean energy to ensure that fossil fuel are being reduced. और इंडिया ने अपने पंचामृत में 2030 तक बहुत तक 50% reductions की बात की है. Prioritizing the clean energy is essential for healthy planet and should be given a global concern. Now, looking at India's एयर क्वालिटी आउटलेट, स्पेसिफिकली नेशनल कैपिटल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल, जहाँ पे वर्ल्ड की कैपिटल है जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, राइट? सो इट्स हैड विटनेस्ड सम ऑफ द पुअर क्वालिटी इन नवंबर, स्पेसिफिकली जब स्टबल बर्निंग काफ़ी हाई पे थी. और ये नंबर्स इट हैज़ टेकन 50% लीप, जहाँ पे पहले 2018 में इट वाज एक्चुअली 155, राइट? वो बढ़ करके अब 243 UGM3 हो गई है. दिस वाज स्पेसिफिकली विथ रिगार्ड्स टू पर्टिकुलर मैटर 2.5. एंड दिस वाज अ सिनेरियो व्हेन द स्टबल बर्निंग काउंट इन नॉर्दर्न इंडिया, स्पेसिफिकली पंजाब और हरियाणा के ऐसे रीजन है जिस वजह से एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होती है एंड एयर क्वालिटी डिटोरेट्स अ लॉट. Now you can see the capital with the ranking of the air quality. These are the global ranking. Delhi has been ranked one among the worst population, the pollutions level. Delhi tops the global capital pollutions chart. Uske baad Dhaka. Then we have countries list which is mentioned over there. So we are more concerned about India's part क्योंकि इंडिया में स्पेसिफिकली नेशनल कैपिटल में इस तरह की pollutions होना ना ही सिर्फ it get a negative feedback at the global level, but also for the people residing in Delhi has been put in the forefront in their health concern. और ऐसा कहा गया है कि यहाँ के लोगों के लिए 10 साल से उम्र कम हो जाती है because of air pollutions. Now, shift in the weather pattern, there have been shift in the weather pattern. These are the evidential fact. उसके अलावे जो recent incident है like Enso, La Nina, El Nino, this has also been the important factor behind the climate change, and it was also talked about by the expert कि इस बार की जो weather conditions हैं, specifically winters की अगर बात करें, winters will be more warmer. This is what the expert has been saying. And Delhi has witnessed the calm wind conditions during the November 2023, limiting the weaker western disturbance impact beyond 2 to 3 days. Now to conclude that part, I mean, अगर बात करें extreme weathers की, this is the part we have been negatively actually looking forward, जहाँ पे इस तरह की जो consequential event है वो होनी actual में this is inevitable in this context. So threatening the health and food security is something which will be there in the larger context. So government adequately need to take measures. जो emergency episodes हैं, whether it is part of realistic science backed to have addressing the emissions, या फिर COP20 के जैसे important summits में जो COP28 के summits हैं, या फिर उसके और भी जो पहले के summits में 27 में जो actual में provisions रखी गई हैं उन्हें achieve करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा. And even the airsheet approach is crucial to tackle the root cause of worsening air quality. Shifting from the cosmetic quick fixes to geoengineering is essential for more effective solutions. So, not only government, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये global problem है. And we as a stakeholder, we as a citizen also need to ensure that we are not contributing towards the environmental pollution. What best we can do, we cannot use we should be using public utility. और जितने तरह के और पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, द सोर्स ऑफ पोल्यूशन नीड टू बी कर्व्ड आउट फ्रॉम द सिटीजन एंड. तो ये एज अ गुड विल जेस्चर, एज अ गुड समैट्रियन हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं सोसाइटी की तरफ. मूविंग अहेड विद आंसर्स डिस्कशंस, जो कल के सवाल हैं उसके फर्स्ट ऑप्शंस के करेक्ट ऑप्शन है बी. इसमें ऑप्शंस 2 करेक्ट है एंड ऑप्शंस 1 करेक्ट है. जो ऑप्शंस 3 है वो इनकरेक्ट है. यू कैन चेक आउट द करेक्ट डेटा फ्रॉम हियर. The second question for the day, here the correct option is C. दोनों options correct है about the purchasing manager index, and you can read out the correct statement from here. Both statement 1 and statement 2
1 and 2, that is 1 and B is correct. Daily MCQs. Today's 2 MCQ question for the day. The first is about the dolphin. The pink river dolphin Boto is named after the Amazon river dolphin. The Ganges dolphin is largest. The Indus dolphin populated has declined significantly in the recent year. So to participate in the question answer, simply you have to write question number 1 in the comment section. उसके बाद आप अपने जो correct options हैं वो हमें comment section में लिख करके ज़रूर बताएं. The second question for the day is about the National Mineral Development Corporations. It is a government-owned enterprises that report to the Ministry of Minerals. It's India's largest ore of producers, right? So you have to check for the correct option और same procedures हैं. आप question number 2 लिख करके अपने जो correct options हैं वो हमें comment section में ज़रूर बताएं. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ. If you have any other concern queries about test series, admissions and programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching. Thank you for staying connected.